Hello everyone, good evening. Welcome to Aakash BYJU'S NEET channel. I'm your teacher Ankita and I welcome you all in today's class where we will be discussing about three very interesting and super important organelles of the cells. And we have mitochondria, plastids and ribosomes. So I hope that all of you are excited for the session. Please make sure you stay with us till the end. If you're new here, do take a moment and subscribe to the channel. Good evening everyone. Good evening Achal. Good evening Milrendra. Good evening, Dr. Pushpita, Tanu, Zakir. Good evening, everyone. How are you all? I hope that my screen is clearly visible and you all can hear me. Yes, I'm doing good. Thank you for asking me. I hope that you're also doing good. Hello, animation video. Hello, Deep. Hello, Nabib. Good evening, everyone. So I hope that all of you can see me clearly and can hear me clearly, right? Awesome. So let's get started. I hope that all of you are in good health. कैसी चल रही नीट की तैयारी? Hello PK. Hello Shalini. Hello Varira. Yes, Varira. Ready? Good. चलिए. पहले मुझे ये बताओ कि how are you preparing? कैसे चल रही नीट की तैयारी? मस्त चल रही है मैम, जोरदार है. Very good दिशा. मैंने good ma'am. Okay Arvind. Good evening. Good evening. Good. चलिए. So everyone, we remember that take a day, right? Take step by step, है ना? और of course examination की dates हमें जल्दी पता चल जाएंगी और मई में बोल रहे हैं तो of course we have some time, right? But तैयारी तो हमारी अच्छी चलनी चाहिए और मेहनत करते रहेंगे हम लोग. Okay, चलिए everyone. Good, very good. Very good, very good Ritu. चलिए, you're new here, welcome to the class. Those of you are new here, welcome to the class. Okay, चलिए. Now everyone, what we'll do, we'll start with our session. Now this is a part 5 where we are discussing about the mitochondria, plastids and ribosomes. And before this particular part, we have 4 sessions already which are there on the channel. In the first part, we discuss about the introduction of the cell theory, we discuss about the prokaryotic cells. Then of course, in the third part, we discussed about the cell membrane and the cell wall. Then we discussed about the endomembrane system which includes the ER, Golgi bodies, vacuole and the lysosomes. So if you're new here and if you haven't watched any of these sessions, please go on the channel and you will be able to find these videos. Okay? चलिए. बिल्कुल, we'll have a mix of both the languages. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा टॉपिक है. जल्दी से पढ़ते हैं. चलिए. वेरी गुड. चलिए, अच्छा रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. तो फिर ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में या फिर ऑर्गेनील के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स ना हमने बचपन से पढ़ा है. बचपन से I'm sure क्लास 9 में हमने पढ़ा है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वी ऑल हैव अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. राइट एवरीवन, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है. यस और नो? राइट, very good, right? So we will be looking ahead what we have. So here we have the amazing, very beautiful mitochondria which plays a very important role in the production of the ATP, right? It's the powerhouse of the cell. We have been learning this, right? We call this as the powerhouse of the cell because it is where we see the production of ATP. Mitochondria ही ATP बना रहा है, right? इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ये तो हमें पता है. अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर देखते हैं. यस, इस बार होमवर्क क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर मैंने दिया था, मुझे याद नहीं है. इस क्लास में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी. ओके, चलिए अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में. कैसा दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? इफ यू लुक एट इट, सिलिंड्रिकल है, थोड़ा सा सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमें दिख रहा है ना. अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है? लेट्स टेक अ लुक एट द डायग्राम एवरीवन. आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टे फोकस. हम फटाफट से डायग्राम डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव अहेड. In the diagram, what we can see that they have 2 membrane, right? The mitochondria have 2 membrane. They have the outer membrane, right? And of course, they have inner membrane. Inner and outer membrane are present in the mitochondria. Okay, I might have forgot. Yes, I will see that. Yes, thank you for reminding me. Right, so we have the inner and the outer the membrane that we have. In between these two membrane, outer and inner membrane, हमारे पास में क्या है? We have the space. दिख रहा है आप सबको? Intermembrane space है, right? We have the intermembrane space over here.
ठीक है. Inside में what we can see this part, right? If I draw, this is the outer membrane, right? ये outer membrane हो गई है, ये inner membrane है. Yes, और inner membrane कैसी है? Everyone, how the inner membrane is? It has folds. And these folds are called as cristae. Right? What we call them as? Crista or cristae. Clear? So this is important. ये जो folds है हमारे पास में, और इन्हीं folds के ऊपर we have those important units. They look like this. छोटे छोटे से units हैं. With the head and the stalk, right? Very good. Very good. Right? ऐसे छोटे छोटे से units हैं. And what they are the important particles, right? And they plays a very important role in the production of the ATP. And उसके दो part हैं, FO portion and F1, head and the stalk. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे when we will be discussing about the respiration. अभी इस chapter में we have a very brief information about it. Then of course we know that mitochondria have their own DNA. So we have the circular DNA. Right over here we can see the DNA is there. See, we have the DNA, which is kind of coiled in structure. We have they have their own ribosomes. That means that they can make their own proteins. And they have the matrix. Java, we have the enzymes, right? Fluid space, right? And what we have, it has the enzyme. Everyone, are we clear with this? All of you, clear? Quick thumbs up. अगर thumbs up नहीं दे सकते हैं, so then you can have the emojis, right? We have lots of emojis at the side, right? Just to show that all of you are there with me. Yes, chaliye. Now, we know that they have a sausage-shaped structure or the cylindrical shape in structure, and they are the site of ATP synthesis, right? Now, ये हमें पता है. Now, let me ask you a question. In some of the hard-working cells, like our muscle cells, or our heart muscle cells, right? You know what? They have more number of mitochondria, which is definitely not a big science, we all know. Why we have in certain organisms, right, and in certain muscles we have more number of mitochondria, because the energy requirement by these organism or by these muscles is more. Hence, they have more mitochondria. So हम ये बोल सकते हैं mitochondria का नंबर फिक्स नहीं होता है सब सेल में. क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे नहीं है कि हाँ मैं बोलूं कि यू नो व्हाट मेरे स्किन सेल में सिर्फ 5 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, मेरे ब्रेन सेल में ना सिर्फ 6 होंगे. ऐसा नहीं होगा ना? क्लियर एवरीवन? सो we need the cells who need more energy, right? So they will have more mitochondria. We have muscle cells have more mitochondria. We can see in heart cells, the cardiac muscle, right, will have more mitochondria. Hummingbird, the wings have more mitochondria. And the meristematic tissues का apical part, right, the growth part, will have more mitochondria. Moving further, let's take a look at the detailed structure of it, है ना? हमने अभी तक देख लिया था क्या क्या important parts हैं. अब हम हर structure को detail में देखेंगे. Yes, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं membrane structure को. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ER. Now let me ask you a question, everyone. ER, Golgi apparatus or Golgi bodies, या फिर हमारा lysosomes या फिर vacuole, do all of these are single membrane structure or double membrane? जल्दी से बताइए. जल्दी से. हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था endomembrane system. So all the organelles that we have studied in the endomembrane system, do they have single membrane or double membrane? Very good, very good. They all have this single membrane. अभी हम जो आज पढ़ रहे हैं, except the ribosomes, both the mitochondria and plastid have a double membrane structure. So they are bounded by the double membrane. Outer membrane is very continuous and very smooth. We can clearly see. बहुत continuous and smooth है. There are no ups and downs in there. Right? And apart from that, what we have? It contains the protein transport channel that actually help in the transportation. And the outer membrane of mitochondria is selectively permeable. That means that it will allow the entry and the exit of few molecules. Selectively permeable. Very important point is this, that they are selectively permeable. Now let's talk about the inner membrane. Less selective, right? अगर एक बहुत ज़्यादा selective है, selectively permeable है, तो दूसरी inner membrane is less selectively permeable. Apart from that, it is not smooth and continuous. It has the folds, right? It has the folds like this. And what we call these folds as? We call this as cisternae. Or cistern, sorry, not the cisternae, the cister, right? Crista over here. And why we have these? To increase the surface area,
राइट? जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास में सरफेस एरिया है, क्योंकि इसी के ऊपर वी हैव दोस पार्टिकल्स जो एक्चुअली एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर? यस? ओके, क्लियर एवरीवन? सो ये क्लियर है हम सबको? एवरीवन, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट? यहां पे ऑफ कोर्स वी हैव द इंटरस्पेस, जहां पे जिसे हम प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, या फिर इनर स्पेस, इंटरस्पेस जो है। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास में आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? हाँ, यस मिलेंद्र, आई एम सॉरी फॉर दैट, या दे आर प्रेजेंट देयर। क्रिस्टा, ओके, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज अ क्रिस्टा। वेरी गुड, FO एंड F1 पार्टिकल, ये कहां पे प्रेजेंट है? क्रिस्टा पे, जो फोल्ड्स हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? वी नो दैट दे एक्चुअली हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। और इन पार्टिकल हेड में, राइट, ये जो हमारा ये पूरा, जैसे हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, क्लियर, FO F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, इनके पास में बहुत स्पेशल एंजाइम है विच इज ATP सिंथेटेज, राइट, जो क्या करेगा, जो एक्चुअली हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ द ATP। एवरीवन, आर वी क्लियर? इसको हम डिटेल में, इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, इसे हम डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस, दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल एंजाइम व्हिच इज द ATP सिंथेटेज इन द ऑक्सीजोम व्हिच हैज अ बेस, स्टॉक एंड द हेड, वेयर वी सी द प्रोडक्शन ऑफ ATP, जिसे हम FO F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर? राइट? यहाँ पे देखिए, वी हैव एन इमेज, वी हैव द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास में ये F1 FO पार्टिकल है, और इस तरीके से ATP के प्रोडक्शन होगा। सो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिस। डन? चलिए, तो अब तक हमने क्या देख लिया? वी हैव टॉक्ड अबाउट द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट्स टॉक मोर फर्दर। इसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। व्हाट वी हैव, द क्रिस्टा, राइट, दे क्रिएट 2 कंपार्टमेंट्स, हमें पता है। वी हैव द आउटर कंपार्टमेंट्स एंड ऑफ कोर्स वी हैव द इनर कंपार्टमेंट दैट वी हैव, राइट। और ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद व्हाट? Similar fluid of the cytoplasm. So intermembrane space है, या फिर the pre-mitochondrial space is actually filled with the fluid which is very similar to the cytoplasm. Clear? ये दो membrane अगर हमारी है, right, इसके बीच में ये जो space है, this is intermembrane space and it is filled with the cytoplasm. Clear? चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखेंगे ये space के बारे में, right? And more than that, what we call it as, right, the other part that we are looking into is the matrix. Anyone, can you quickly tell me, matrix क्या है? जल्दी से बताइए matrix क्या है? Yes, जल्दी से बताइए everyone, matrix क्या है? Yes, Disha, we will give you. Yes, so usually on our channel we have a class at 1 PM of physics. Then at 2:30 PM, Sneha ma'am comes and take class of zoology. At 4 PM, we have a class of chemistry, and at 7 PM, I have a class of botany. Yes, very good, fluid, right? So, जो inner compartment है, right, outer compartment के बारे में बात करी हमने, bounded by the outer membrane. Inner compartment is bounded by the inner membrane, and वहाँ पे what we have, matrix. ये जो अंदर वाला part है, the blue color part that we have is the matrix, right? Clear? और क्या होता है इसमें? We have the enzymes, right? It is rich with the enzymes and the protein that are required for the various reactions. So everyone, you can take a screenshot और आप note भी कर सकते हैं अपने साथ में कि it is rich with the enzymes and proteins, right? And of course, ये जो enzymes हैं use होते हैं respiration में and और जो बाकी metabolic activities चल रही हैं उसमें. Clear? So ये भी बहुत जरूरी है. चलिए, ये हमें याद हो गया. अब हम आगे बढ़ेंगे और जिसे हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में. इट्स द सेम रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. हमें पता है एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स है, ये बहुत जरूरी है. तो एवरीवन प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. इट हैज एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन एंड वेरियस अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंगुलर डीएनए, सिंगल डीएनए है, राइट. DS, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में. व्हाट दे हैव अ डबल स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रिया. RNA molecules भी हैं. And which type of ribosome is there? Very important question from the NEET. कितने हमारे पास में अगर हमसे कोई पूछेगा कि राइबोसोम्स कैसे हैं, so we will tell them we have 70S ribosome
एंड ऑल ऑफ यू कैन क्विकली टेल मी वेयर वी हैव 70 राइबोसोम्स? इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 70 राइबोसोम्स किसी और ऑर्गेनिज्म में भी है। वेरी गुड, 70 है बिल्कुल राइबोसोम्स में, पर 70 राइबोसोम हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर और मिलता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया के अंदर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यूकैरियोटिक सेल्स में कितना है? 80s, राइट। और वेराज प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें कितना मिलता है? जो राइबोसोम है हमारा है 70s। वेरी गुड। तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, दिस विल all will remember everyone. So now we are clear with what is the outer structure, right? We are clear with what is the outer structure, what is the inner structure. अंदर structure में क्या है? We have talked about the matrix also, the fluid. Now we have an understanding. Now what we'll do? We will reveal something which we are kind of already aware of. We all are aware that mitochondria are called as semi-autonomous organelles. Can you tell me why? क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा बोलते हैं कि वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है? जल्दी से बताइए। आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है कि हम उसे बोल रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस? सेमी ऑटोनॉमस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस ओवर हियर? जल्दी से बताएं बच्चों। गुड इवनिंग पवन, श्रुति, एनोनिमस, हेलो सौम्या। डीएनए, वेरी गुड शालिनी, उनके पास में डीएनए है, अपनी खुद की रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, राइट? क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? थैंक यू शिफा, हेलो वैशाली, सॉरी वैष्णवी, वेरी गुड। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स एंड वी ऑल नो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, राइट? हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन कैन डिवाइड इटसेल्फ, राइट? सेल्फ रेप्लिकेशन होती है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हम क्यों बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल? क्यों बोलते हैं उसको? खुद का जेनेटिक मटेरियल है उसके पास में, उसे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे सी मेरे पास में मेरा डीएनए आरएनए है, भले ही सेल मुझे ना दे पर मेरा काम तो आराम से चल सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, अपने प्रोटीन्स खुद बना लेता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स है इसके पास में। राइबोसोम्स बनाने के लिए क्या चाहिए हमें ऑफ कोर्स राइबोसोम डीएनए से बन के आ रहा है, राइट? मतलब न्यूक्लियोलस में रहता है। अब यहाँ पे तो इनके पास में अपना ऑलरेडी है। क्लियर एवरीवन? यस। हाँ, मैं बीच बीच में हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप परेशान ना हो। दोनों लैंग्वेजेस को मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। यस, फिशन बच्चे। अब हम यहाँ पे सत्या सेल डिविजन जो है बच्चे उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं, राइट? फिजन की अगर हम बात करें, फिजन क्या किस में होता है? हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन, ऑल ऑफ यू हमने बाइनरी फिजन पढ़ा है ना? फिजन में क्या होता है? एक सेल है हमारे पास में, उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। व्हाट हैपन इन फिजन? देयर आर टू वर्ड्स, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन में क्या हो रहा है? साथ में आ रहे हैं। फिजन में क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन, है ना? तो एक सेल से दो सेल बन जाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन की मदद से रेप्लिकेट करता है या फिर डिवाइड करता है। विल नॉट से रेप्लिकेट बट डिवाइड करता है। तो ये 3 पॉइंट्स याद हो गए सबको कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल खुद का उसके पास में, सेकेंड इट हैज इट्स ओन राइबोसोम ऑल्सो, एंड थर्ड इट डिवाइड्स इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। क्लियर है सबको, राइट? एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस? यस, जल्दी से गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन। बढ़िया। एंड एवरीवन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, है ना? टीचर को ये देख के अच्छा लगता है कि लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एनसीईआरटी की एक बार फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे ताकि ऑल आर कॉन्सेप्ट्स आर विद अस। आई होप सब एनसीईआरटी के साथ में क्लास में हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, यस। डॉक्टर पुष्पिता अभी दोबारा रिवाइज करेंगे। तो हियर वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? इट्स अ स्पेसिफिक, मतलब हम इसको कैन वी स्टेन, क्या हमें दिख सकता है? जल्दी बताइए, राइट? अनलेस स्पेसिफिक स्ट्रेन, अगर हमें स्ट्रेन से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। क्लियर? जेनस ग्रीन रहता है स्ट्रेन का नाम। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरीज बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। In the terms of the shape and the size, consider a degree of
variability, right? Of course, there's a difference in the shape and the size of the mitochondria also. Typically, it's a sausage shape or cylindrical, having a, again very important everyone, diameter. Jahan pe NCERT have mentioned the numbers in terms of the size of the cells, right? The number of year in which it happened, everything is important. So हमें क्या याद रहेगा? Cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, right? Average, and the length is this. Clear? So we'll remember this. Each mitochondrion, right, it has a membrane-bound structure. Double membrane है, outer membrane and inner membrane. यहाँ पे देख लिया. Divided into lumen, of course, we have two compartments, outer compartment and inner compartment. Inner compartment, and what we have is filled with a dense homogeneous substance, which we call it as matrix, right? And in the outer form, in the outer membrane form, the continuous limiting boundary of the organelle, right? The inner membrane form a number of infolding called as crista towards the matrix, and this is there to increase the surface area. क्यों है? क्योंकि surface area को increase करना है. उसके बाद में the two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are a site of aerobic respiration, we all know that, and they produce cellular energy in the form of ATP, and that is the reason why we call them as a powerhouse of the cell. The matrix also possess a single circular DNA. Matrix mein what we have a single circular DNA, a few RNA molecules, ribosomes 70S, and compartment required, and the other components required for the synthesis of protein, and it's divided by fission. All of you, are we clear? Yes? Are we clear with this? ATP बच्चे, ATP is adenosine triphosphate. Clear? ATP is adenosine triphosphate and ATP is energy currency. जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस होते हैं, जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो भी हमें एनर्जी मिल रही है, राइट? जैसे मैम आप इतने एक्टिव कैसे हो, या फिर मैं आपसे पूछूं आप इतने घंटे कैसे बैठ के पढ़ाई कर लेते हो, बिकॉज एनर्जी आपको कहां से मिल रही है, आप क्या बोलोगे? वी हैव द ATP. ATP is adenosine triphosphate. विलेजर बच्चे, अभी इस क्लास में will not be able to focus on the ATP. ATP is adenosine triphosphate made in the mitochondria. Synthesis किस कहाँ पे हो रही है? In the mitochondria. We will be learning more about it in the respiration chapter. ठीक है, अभी अगर पढ़ा है तो there will be the break of the flow. So हम उसे आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. चलिए everyone, here we have the beautiful structure from the NCERT of mitochondria. Clear? So all of you, are we clear with the mitochondria? जल्दी से बता दीजिए. So इसमें बहुत ही short topic है. It's a very small, very short topic. Cell chapter in general, right? We know कि कम से कम कुछ questions आ जाते हैं. तो हमें we have to focus more on the NCERT. NCERT के अलावा there's nothing, right? If you read NCERT thoroughly, everything is possible. तो अब हमारा mitochondria is done. Whatever we have in the NCERT, we have discussed it, and here and there more information about it. Now let's move ahead to the next organelle, everyone, which is very, very interesting. But let me ask you. I'm sure you would have seen this. I'm sure you would have seen these structures. Yes? Villager, we have that question. Really appreciate that question, Villager. After this topic, we will be addressing to that. Yes, I'm sure you would have seen this, right? What is this? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? These are the solar panels, right? These are the solar panels, and of course, the scientists got an idea that we have something similar in the nature that actually help in trapping the sunlight, and of course, it makes its food, right? So similarly, we can also harness the sunlight energy to have electricity, right? Or to run some appliances. So these are the solar panel, and the idea what we have, we can call, this has been kind of copied from the green leaves. And why green leaves? We all know because they are very important and they perform photosynthesis, a very simple process where in the presence of sunlight, plants take up the carbon dioxide, water and minerals from the soil, and in the presence of the sunlight, in the chlorophyll, they produce the carbon dioxide, they actually produce the oxygen and the carbohydrates, right? So photosynthesis हमें पता है. Now that we have this idea, scientists thought कि चलो we can use it to have energy.
So we'll be discussing about a very important organelle, which is the plastid, right? Which is plastids. Now plastids are really very special, right? And they are exclusively present in the photosynthetic organism. Okay? So here we will be discussing about the plastids, and there are three major types of plastids that we have in our textbook, and we'll be learning about it. We have chromoplast, leucoplast and chloroplast. Chromo, leuco and chloro. So let's talk about the chromoplast. What we have? They have colored pigment, right? We have like red color, yellow color. I'm sure you would have seen beautiful vegetables, fruits and flowers in these color. All because of the colored pigment that is coming from the chromoplast. कौन से हैं? What we have? We call them as the keratinoids. Keratinoids, right? Clear everyone? फिर हमारे पास में leucoplast, which of course has no color. And it plays a very important role in the storage, right? किस में help करते हैं? In the storage में. And we have the chloroplast, इस पे तो हम बात करेंगे ही, right? Chloroplast is present. They have the green color pigment, which is chlorophyll, that is present in the green leaves and plays a very important role in the process of photosynthesis. Yes, I know. Yes, we have the same topic and बस थोड़ा सा upgrade हो जाता है, right? चलिए. Let's talk about this, everyone. The chromoplast. The chromoplast, right, have the keratins and the xanthophylls, right? And they're responsible for giving the beautiful colors to the fruits and the flowers, right? I'm sure you can see the beautiful fruits over here. They give the various different types of colors altogether, right? We have tulips, the red that we have. All of it is possible because of the chromoplast. Then we have leucoplast. They're absolutely colorless. Store nutrient, right? We have the storage of these nutrients like sugar, carbohydrate, fats, proteins, right? And based upon that, we can name them differently, right? We can name them differently. So if a leucoplast is storing the carbohydrates, what we call it as? We call it as the amyloplast. Here we call it as the amyloplast. Very good, Disha. Yes, xanthophyll is also present in the brown algae. Absolutely correct. Hello, Roshan, Achal, Shankar. Thank you. I can see your chat and the response. Very good. So if the leucoplast is storing the carbohydrate, we call it as the amyloplast. If we see that there's a storage of the lipids, what we call it as? Alloplast, right? If we have the storage of protein, we call it as the alloplast, right? Clear? So ये नाम हमें याद रहेंगे. Super important. Here we have. तो leucoplast वैसे बहुत ही सिंपल हैं. They are colorless. They actually plays a very important role in the storage. अब storage में तीन चीजें आ गई. कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करें तो क्या बोलेंगे? लिपिड को स्टोर करेंगे तो क्या बोलेंगे? एंड प्रोटीन को स्टोर करेंगे तो we'll call them this. Everyone clear? चलिए. आज बहुत दिनों बाद में आप all of you are responding really very well. So सबके लिए काजू कतली. Right? Those of you are new in the class. Yeah, this is what I do. If you all are giving a good response and if you're going if you all are participating in the class, we'll have sweets like this. Okay? Chaliye. And a smiley though is there for all of us. Okay, now let's move ahead to the important one, right? इसका हम structure detail में discuss करेंगे, which is the chloroplast. It is present in the green parts of the plant, right? Now, it's super important. We don't have to tell you that it's important. We all know कि बहुत जरूरी है. अब हमारा प्यारा सा chloroplast. Chloroplast कहाँ पे है? In all the green parts of a plant, we have the chloroplast, right? And it contains a very special pigment, which is chlorophyll. And of course, apart from that, some other pigments, such as the carotenoids, right? Apart from the chlorophyll. Now, this green color that we see is because of the presence of chlorophyll, right? When we talk about the size and the number, again, it depends upon the amount of light which is there to the plant. Clear? Right, everyone? कितनी light plant को मिल रही है? Based upon that, the size and the number of chloroplast will vary. Very important. Clear? Plants growing in a shade have more chloroplast because they have to make more food, whereas plants growing in full sun will have less number of chloroplast. So we all know that chloroplast plays a very important role in the process of photosynthesis,
right? Chloroplasts have a very important pigment, chlorophyll, that absorb the light, right? And because of that, the plants can make their food. So, if we're talking about the number, if the plant is there in the shade, yahan pe sun hai, and the plant is over here, there's a shade. So, number of chloroplasts will be more. If there is no shade in this area, the number of chloroplasts in the cell will be less. Okay? Soumya and Shifa, chromoplasts are a type, right, of the plastid. They have the pigment like carotenoid. Okay, 1 minute. Yes, they have a pigment which is the keratins, and they have the xanthophylls which give them a beautiful colors like red, pink, yellow, all the bright color that we see in the plants, in the flowers, right? So they are responsible for giving the color. Clear? Yes, thank you so much. Slip of tongue. Clear, Soumya and Shifa? Nice. Very good, Anchal. Okay? Yes. Yes, Deep. What are the questions? Yes, Villager. Thank you for helping your friends out here. Chroma means color. Okay, chaliye. Now everyone, let's quickly take a look over here. So we have exhibit of different, different types we have, right? We have cup shaped. Can you quickly tell me, right, where we have the cup shaped chloroplast? Ye jaldi se bataiye all of you. This is there in our textbook also. The cup shaped chloroplast is there. Very good, very good. Clydomonas, I'll write it over here in very small. Clydomonas, very good. Okay. What about the oval shape? Everyone, what about the oval shape? Oval shape chloroplast kahan pe hai? In the higher plants, right? We can see over here. I can write in the higher plants, right? Then of course we have another shape, the C shape, right over here, right? The C shape that we have, yes, or the kind of this particular shape, which we call it as the glitch shape also. Yes, here we have another one, griddle shape. Where we have the griddle shape, we have it in the, jaldi say, Spirogera. Over here we have, right? Here we have the spiral one where we have the Spirogera. Yes, and at the last we have this, which have the, just 1 minute. This is very special. Right, we all have these examples, everyone. You can take a screenshot and of course we'll discuss it more further. Chaliye, right? Very good, everyone. So I hope that all of you are clear with this. Very good. Chaliye. Now let's deep dive into the word of chloroplast. Right? See what we have over here. Everyone take a movement. I'll just move aside. Take a movement and just look at this. Yahan pe dekhiye all of you what we have. We have the chloroplast over here. Yes, what we have the chloroplast. Yes, chaliye. Now we can clearly see that they have two membrane, right? We'll take a more closer look over here, right? And this is what, if you go inside the chloroplast, this is what we will see. Yeah, kind of swimming in the matrix, stroma mein. So let's take a look at the structure. Now when we talk about the structure of the plastid, chloroplast, right? What we have, again, is a double membrane bound structure. It has outer membrane, it has inner membrane, right? We call it as a plastid space, which is fluid with the fluid. Then of course we have inner membrane. Apart from that, everyone, a very basic structure. I'm sure all of you have seen this, right? Wait a minute. Here we have the inner. Now you only tell me, everyone, right? We have disc-like structures. What are these disc-like structures? What are these disc-like structures are called as? What are these disc-like structures are called as? Jaldi se.
They have chlorophyll. Very good. These disc-like structure, if we take one disc, what we call it as? We call it as a thylakoid. And if we stack them together, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we stack them, all of these together, what we call them as? We call them as the granum. Right? In our textbook, they have mentioned one single. Grana. Singular is grana and then the granum. Okay? Ab, we will see that the stacks are joined together. We call this bridge. The bridge which is actually helping in joining of the stacks together. यहाँ पे भी stack है. Thylakoid का stack एक तरफ है, दूसरी तरफ भी हमारे पास में thylakoid का stack. इन दोनों को जोड़ने के लिए एक middle bridge बनता है, जिसे हम बोलते हैं middle laminae. Clear? Clear everyone? Very good. Clear? इसके अलावा what we have, यहाँ पे क्या है? Outside this we have fluid. That is stroma. Right? Very good. Clear? Outer membrane. And we have inner membrane. इसका अपना खुद का DNA है. And they have their own ribosomes also. चलिए, we'll take a beautiful look. यहाँ पे structure को और अच्छे से हम गौर करके देखेंगे. Clear? So I hope that you can see the stroma, which is over here. Lamina, जो join कर रहा है as a bridge, right? Thylakoids, the disc-like structure, when they are stacked together, we call them as granum. Inner membrane, outer membrane. In between that, we have the intermembrane space. Starch की granules भी दे दी है, ribosomes हैं, DNA है हमारे पास में, और drop of lipids भी हैं. Stroma में, we'll tell you. Shifa, just 1 minute, बच्चे. I'll tell you what is the role of the stroma. I'll tell you. Just give me 1 minute. आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया. What is stroma? Stroma में क्या है? पूरा fluid है, matrix है, और यहाँ पे बहुत कुछ है. Okay? So अगर ये हमारा chloroplast है, ये पूरा area जो fluid है, matrix में है, right? It has the fluid. Right? And what it has all of these things, right? It has enzymes, it has starch granules, thylakoid membrane structure भी इसी के अंदर है, ribosomes भी इसी में है, और circular DNA भी कहाँ पे है हमारा? Stroma में. So stroma actually act as the carrier, not the carrier, it act as a place where we have lot of things stored. Clear? बहुत कुछ store है ना यहाँ पे? इतनी सारी चीजें हमने कहाँ पे store करी हुई हैं? क्लोरोप्लास्ट ने अपने साथ में स्टोर करी हुई हैं. क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमें मिलेंगी. क्लियर? ऑल ऑफ यू? चलिए, देन लेट्स टॉक अबाउट द थैलाकोइड, द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर और द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट वी हैव. इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल पिगमेंट. एंड यहीं पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वी हैव ग्रेना. ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है. तो देखें तो इसमें जो हमारे पास में सैक्स रहते हैं ना, बैग्स रहते हैं जूट के, वैसा ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है. एंड ईच थैलाकोइड इज स्टैक ओवर टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द ग्रेना. ओके, क्लियर? ओवर हियर वी हैव. क्लियर एवरीवन? क्लियर है? यस, वेरी गुड विलेजर. Right? As the stroma have lots of enzymes into it, it actually plays a very important role in light-dependent reactions or the light-independent reaction, the dark reaction that happens. Let's talk about more further. Thylakoid के बारे में बात कर ली है. Stroma, laminae, right? Fred channels भी बोलते हैं. Or sometimes we call it the middle lamina also, right? But over here we are calling them as a stroma laminae. Flat, and they are the membranous tubules. We can see over here, right? See this? And they're interconnected, the thylakoids of different grana. Clear? They are a very important part of it. See over here, we have the stroma lamina. Then, अब इस तरीके से हम याद रखेंगे. Plant cell है. Plant cell के अंदर we have the chloroplast. Chloroplast के अंदर we have the, what we have? We have the thylakoids का disc-like structures में. There's a whole stack of it which is called as a grana. And individually we have one, right? So we have plant cells, chloroplast, granum. And at the end what we have, everyone? Thylakoid, or is thylakoid के अंदर what we have?
we have the thylakoid lumen. Clear everyone? इतना सबको clear है? All of you, are you clear with the structure of this? Yes? Very good. And similarly, like we called it mitochondria as a semi-autonomous, right? These plastids are also called as the semi-autonomous organelles. Yes, everyone, are we clear? Yes, Dip. Today I don't have questions with me. I don't have any questions that we can solve. But tomorrow when we have class, I'll surely add questions. A quick revision of the class that we have today. And of course, we will be looking at the other questions also. Okay? So tomorrow everyone at 7 PM we have class. All of you please make sure you come to the class tomorrow. अभी खत्म नहीं हुआ है. We have ribosomes to do. जल्दी से खत्म करते हैं उसको. But कल के class पे क्या होगा? We'll be finishing off the chapter and कुछ questions भी देखेंगे. Okay? चलिए. So again, the same reason, it has its own genetic material, can produce a protein and of course divide itself by the fission. Okay? Did you know that? This is what the villager in the beginning was talking about. Yes? Clear? That microbes to organelles. So, we clearly can see that कि mitochondria and chloroplast अकेले भी sustain कर सकते हैं. Right? They don't need an organelle, they don't need a cell to survive. They are kind of capable of living by themselves. They have their own DNA, ribosomes, they can reproduce also. So, it is believed that, right, they must have entered as a host cell. And of course, due to the generation of evolution, eventually, they are in the modern cells. Eventually, what would have happened? They were the individual identity. But over the period of time, what we saw that they actually become a part of a cell. Clear all of you? Yes, hello, learn with Hina. Welcome to the class. Hello, Naveen. हाँ, ये बच्चे अभी हम upcoming classes में पढ़ेंगे. Yes. इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे मैम? आप बताइए. I will be conducting a poll everyone to ask. कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पिक करें? I think we can start with the cell division if you all want, but we'll have a poll. Don't worry, we'll have a poll for it. So everyone, are we clear with this? Let's quickly take a look at the NCERT. फटाफट से इसे पढ़ते हैं and then we'll move to the ribosome. The छोटू सा प्यारा सा topic. Plastids are found in all plant cells and the euglenoids, right? They are there. They're easily observed in the microscope because they're generally larger in size. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. We have three types of three pigments that are there, and because of these pigments we have different color. We have chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast contain chlorophyll and the carotenoids pigment, which are responsible for trapping the light energy, essential for photosynthesis. The chromoplast has fat soluble. This is important everyone, right? Fat soluble carotenoids pigment like keratin, right? Then we have xanthophylls and others are present. This gives an yellow, orange, red color. The leucoplasts or the colorless plastids, they have various shapes and size. It plays a very important role in the storage. Here we have a myeloplast to store the carbohydrate, the starch. We have potato in this example. Myeloplast stores oil, fats, whereas the Aleuroplast stores the protein. Yes. All of you, are we clear? Yes, Naveen, I have seen your question. That's what I said, bache. We will not be able to discuss in today's class. We will be doing this in the upcoming classes and on our channel. If you want to see, there are videos that will be helping you to understand. अगर आप photosynthesis session देखना चाहते हैं in detail में, तो है. आपको वो समझ में आ जाएगा. Yes. Cytoplasmic and ribosomes पढ़ेंगे बच्चे भी ribosomes पढ़ेंगे. Cytoplasmic आए उसके बाद में आपको clear हो जाएगा. Then majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. They are lens-shaped, oval, spherical, discoid, and even ribbon-like organelle. The length is important. They have mentioned the length and the width. The number from 1 per Clytomonas to green algae काफी vary करता है. Clear? So this is important. Again, numbers. ये आया है PYQ. Clear, this is important. Please make sure you remember this. Clear everyone? फिर mitochondria, chloroplast again also have a double membrane. 2. अंदर क्या है? We have the inner membrane. Outside we have the outer membrane. Very similar to the mitochondria, right? In the chloroplast, the fluid, the space that we have is called as a stroma.
Large number flattened sacs are called as a disc-shaped structure are called as the thylakoids. Right? Present in the stroma. They are arranged in stacks with pile of like a coins. Grana singular. Grana and singular is called as granum. I said it ulta in the beginning. So I'm here correcting myself. Grana is a whole stack. Granum singular. Right? In addition, there are flat membrane. Right? Of course, they're joining it, acting as a bridge, which is the stroma laminae, connecting the thylakoids. Then we have the stroma of the chloroplast containing enzymes required for the various reactions. Very important, it contains a small and double-stranded circular DNA. And ribosomes, chlorophyll, also have pigments present in the thylakoid. Chlorophyll is present in the thylakoid. And they have the 70S. Right, so the ribosomes of the chloroplast are 70S, super important. Then the cytoplasmic ribosomes, 80S. Clear everyone? Everyone, all of you, are we clear with this? Quick thumbs up, jaldi se bataiye. Yes, everyone, I hope that all of you are clear with this. Very good. Good. Okay, chali. Now, the last but not the least, let's discuss about the ribosome. Here we have. We can clearly see the nucleus. Nucleus, wo jo blue hame dikh rahe hai na, these are the ribosomes. Ma'am, is mitochondria is a bacterium which evolved into organelles and now the... Cannot say. Structures ko definitely change hua hai, right? Does not have a motility organ into it, जो actually help करे in the movement. Will not call it as, right? Right, we will not call it as कि हाँ भाई mitochondria से bacteria में convert हुआ है. It's a process which had happened, right? Eventually, independent organelles थे, they went into the host and that's how they been there. Okay? Yes, आंचल बच्चे. I didn't get your point, bachche. Yes, Deep, we will have the questions. Okay, chaliye. Let's talk about the ribosomes, everyone. So, again, in our textbook, they have mentioned that the ribosomes were discovered by the George. Okay, 1 minute, let me just change the pen color. Right, they were discovered by the George Plastids. Right, in the year 1953. A very important year. By using the electron microscope. They're also called as the Plastids particles made up of the RNA and the protein. RNA and protein दोनों होते हैं. Smallest cell organelles हैं, हमें पता है. They are present in all the cells except the RBC. Yes, except the RBC. ठीक है? हाँ बच्चे, बिल्कुल. Easy explanation करूँगी. So ribosomes के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, discovered हुए थे in 1953 by George Plastids. राइट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सभी सेल्स में प्रेजेंट है, एक्सेप्शन है दी मैमेलियन और बीसी. फिर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और दिस इज दी साइज ऑफ इट, राइट, अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, वेरी छोटू से. क्लियर? They don't have a membrane. This is very important point. Very important point. They are there in bacteria also. They are there in the organisms like us also. They have two units. Absolutely correct. They have two units. Large unit and the small unit. Clear? अब ये unit में, of course, we have the large and the big subunit. Okay? Let's talk about the different types of it. 70S and 80S. We have just discussed 70S is present in the prokaryotes, right? In prokaryotic cells, which type of ribosomes we have? 70S. 80S ribosomes are present in the eukaryotic cells. So if we talk about the types of ribosomes, we have two types, 70 and the 80. 70 are present in the prokaryotic cells and 80 are present in the eukaryotic cells. अब यहाँ पे division जो हो रहा है वो कैसे होता है? Larger unit कितनी है आप मुझे बताइए? Larger subunit. Right, larger subunit and the smaller subunit. Here we have the larger subunit and small subunit. 60-40, right? Yes, and 60-50. 60-50 or 60-40? 70-30 तो पता है, right? 70-30.
70 में है, we have 30 and we have 40. चलिए, we'll look at this, right? चलिए, now let's talk about this S. What is this factor that we are talking about, right? What is this S? Now I'm sure by now we all are kind of aware about it, but let's quickly take our understanding. हो सकता है कि हमें याद ना हो सकता है कि आप भूल गए हो, या फिर हम एक बार अपनी समझ के लिए दोबारा देख लेते हैं. S is called as the Sedgwick unit, and which is nothing but the sedimentation coefficient. क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, बेसिकली बेस्ड अपॉन दी सेडिमेंटेशन, कितने रेट में सेडिमेंट हो रहा है, कितने रेट में हैवी चीजें नीचे आ रही हैं, हल्की चीजें ऊपर हैं, कितनी देर में वो सेपरेशन हो रहा है, बेसिकली कितनी देर में वो सेटल हो रहे हैं, उस यूनिट को हम लोग सेडवर्ग यूनिट बोलते हैं. और इस यूनिट पे ऐसा कुछ नहीं कि हम उसे ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा 60 + 40 है, अच्छा ये इसका कैलकुलेशन कुछ और होगा. नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 30 + 40 कर दें. नहीं, वी कैन नॉट से दैट, राइट? इसमें एडिशन नहीं होता है. ये एक यूनिट है जिसपे ऑफ कोर्स जो हमारे बाकी यूनिट्स की तरह किलोमीटर्स और टाइम की तरह पे एडिशन नहीं है. सो द मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ पार्टिकल सेडिमेंट्स इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. लार्जर पार्टिकल्स क्या होंगे, वो नीचे चले जाएंगे क्योंकि वो हैवी हैं, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे. लार्जर एंड डेंसर पार्टिकल हैव द ग्रेटर एस वैल्यू, या फिर ग्रेटर एस की वैल्यू आएगी, और जो हल्के पार्टिकल्स है जो ऊपर फ्लोट करें उनके पास में क्या होगी, कम एस की वैल्यू होगी. सो एवरीवन, ये क्लियर है? बिल्कुल बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश है, बट वी एज नो दैट कि मतलब ज्यादातर एग्जाम जो हम लिखते हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो इसलिए आई ट्राई टू हैव बोथ द लैंग्वेजेस का मिक्स. थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट अगेन आई ट्राई टू हैव अ परफेक्ट बैलेंस फॉर बोथ ऑफ दीज. क्लियर? चलिए, एवरीवन आर वी क्लियर? लार्जर यूनिट बॉटम में जाएगी, राइट, बिकॉज इट हैव हेवियर, इट इज हेवियर, और जो लेसर जो एकदम लाइट वह है वो ऊपर ही फ्लोट करेगी. क्लियर? जो इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अब हम जाएंगे डिटेल में. वी हैव 70s एंड 80s. सब यूनिट्स में है हमारे पास में 50 एंड 30, राइट? 70s कैसे डिवाइड हो रहा है, वी हैव 50s एंड 30s. 30s is a smaller unit, 50s is a bigger unit. और जो यूकैरियोट्स में है हमारे पास में क्या है, 60s जो बड़ा यूनिट है, जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उससे वो कितना है, 60s है, and the smaller part is 40. So if I have to write 60s and 40s, this is large subunit and this is small subunit. यहां पे this is large subunit and this is small subunit. Clear? ये याद रहेगा all of you? You remember this? Yes, all of you. बढ़िया. आई होप सबकी एनर्जी हाई है. 1 घंटे में ऐसे तो नहीं परेशान हो गए हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, थोड़ी सी देर और. चलिए, इस क्लास के बाद में 3 टॉपिक्स आर 100%. आप इस तरीके से देखो कि आफ्टर दिस क्लास योर माइटोकॉन्ड्रिया, योर प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स का टॉपिक फुल टिक एकदम बढ़िया से. यहां पे एक हमारे पास में बढ़िया सी इंफॉर्मेशन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज 55s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट हैव 70. ऑफ कोर्स इट्स अभी हमने पढ़ा है कि 70s है, तो यहाँ पे जरा सा करेक्शन है. क्लियर? एवरीवन आर वी क्लियर? बढ़िया. चलिए, राइट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स? इजीएस्ट है, बस ऐड करना था कि आपको याद रहे. द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज दैट प्ले अ सुपर इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? इस तरीके से they plays a very important role, and we all remember polysomes. PYQ क्वेश्चन है, ये आया है, या फिर पॉलीराइबोसोम्स, राइट? हमें याद रहेगा लॉन्ग चेन जिस पे राइबोसोम्स बैठे हैं, इट्स दी पॉलीराइबोसोम्स और पॉलोसोम्स. क्लियर? सो इस तरीके से हमें याद रहेगा. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, चलिए, लोकेशन ऑफ राइबोसोम हमें पता है, राइट? Location of ribosomes, they are present on the rough ER and they are there in the cytoplasm also. And kind of, going back to the ER, cytoplasm से जब ER, right, जब प्रोटीन बन जाता है, राइबोसोम्स है, फिर कहाँ पे जाएगा प्रोटीन? प्रोटीन जाएगा आगे गोल्जी अपैरेटस में. क्लियर?
Yes. Okazaki fragments. Zahran are present. Like we see the Okazaki fragments in the DNA replication on the opposite strand, which is also called as the lagging strand. जहाँ पे DNA polymerase action 5-3- में करता है, but जो दूसरा strand है वो opposite है, that is 3- to 5-. Right? उसके opposite में 5- to 3- पे वो काम कर रहा है. उसका नेचर है कि वो इस डायरेक्शन में काम करेगा. बट जब लैगिंग में जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो जो बिकॉज ऑफ द एंटी पोलैरिटी, राइट, वो फ्रैगमेंट्स बना रहा है पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं. उन फ्रैगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं. यस, वेरी गुड. mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए. क्लियर शिफा? चलिए everyone, let's quickly read the NCERT. Ribosomes are the granular structures first observed under the microscope, right, as a dense particle by the George Pelletier in the year 1953. They are composed of a nucleic acid and protein, RNA, और proteins के बनते हैं, not surrounded by any membrane. Eukaryotic ribosomes, 80S, prokaryotic, 70S. Each ribosome has two units, larger unit and smaller unit. 80S ribosome have 60S and 40S, while the 70S ribosomes have 50S and 30S. S क्या है? Sedgwick's unit है, stand for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and the size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two units. This is what we have in our NCERT. And tada everyone! With this, हमारी आज की क्लास समाप्त. Yes? Clear everyone? So, now that we are done with this, tomorrow we'll have the last class of this particular chapter. कल हमारी क्लास कितने बजे है? 7 बजे. Right? कल कितने बजे क्लास है हमारी? 7 बजे है. I want to see all of you in the class. थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन के और कल के सेशन पे क्वेश्चन करेंगे और कल इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आना, क्लास में कोई डाउट्स हो तो पूछना और क्लास के बाद में फिर से जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना ताकि टॉपिक पे हमारी मास्टरी हो जाए. क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन. ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. पक्का? विल बी मीटिंग टुमारो एट 7 PM. ऑल ऑफ यू, सबको बोल दे अपने फ्रेंड्स को कि सबको 7 बजे क्लास में आना है. Tomorrow everyone will meet again. Thank you so much everyone for being there with us. Right? Do take care of yourself and keep on learning with us. Bye bye. Good night everyone.